नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। आप सभी का हीलिंग एमएनडी इंडिया के मीटिंग के आज के रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025 के दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025 मीटिंग। Thank you all for joining today. Today I have invited all the healing ALS crowd also. So everybody should enjoy today. सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। विशिंग यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आप काइंडली कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। आपका कोई क्वेरी होगा तो आप चैट बॉक्स में आप टाइप करके दे सकते हो। मेरा प्रेजेंटेशन बहुत लंबा है, फटाफट हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लेंगे। इंडिया से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। डिटेल ईमेल आईडी पे अपना ईमेल डिटेल ईमेल पे भेज सकते। The main intention of healing India is to heal the world. And we go through the disclaimer. मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, आप ये पॉज करके रीड कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल द डिटेल्स। This is Dr. Jawar Shah. He was Bulbar MD with a lot of dedication and perseverance. Today, right now, he is also able to drive a two-wheeler and buy vegetables from his local market. Hats off to Dr. Jawar Shah. Dr. Manjunath ji of Bangalore, he is also reversing bulbar MD and he has a great support from his family. Mr. Amitabh Bachchan Devendra ji from Amravati is also reversing MD. He is a very good reader. He reads lots of books and reverses MD. This little girl was on the second last stage of MD. She was using a BiPAP and a feeding tube, but she has also reversed MD.
with a lot of yoga and homeopathy and all the other treatment, holistic treatment solution. Today I'm going to discuss about a lot of how we can manage MNDALS with the anti-food and nutrition. It is all about management of inflammation in the body, oxidative stress, toxins, and free radicals in the body. Apart from that, emotional stress, gut health, all that plays a major role. Today we are going to talk about food, herbs, spices, and in food that we can eat in neurodegenerative conditions like MNDALS. This presentation explores various foods, herbs, and spices that possess anti-inflammatory properties, highlighting their benefits for overall health. आप ये प्रेजेंटेशन देखें और इसमें जो जो खाद्य पदार्थ दिए गए मैं आप अपना बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटा सकते. I would like to thank my son, both my sons who have helped me in helping me in creating this presentation. What are anti-inflammatory food? Food that don't increase the inflammation in your body. Anti-inflammatory foods are those foods that help reduce inflammation in the body, which can lead to a myriad of health issues, including chronic diseases like MDLS. These include a variety of fruits, vegetables, whole grains, healthy fats, and specific herbs and spices. Diet is the most important thing. Incorporating anti-inflammatory foods into your diet is essential for maintaining health, promoting healing, and preventing diseases such as heart health, diabetes, and arthritis. Overview of benefits. The benefits of anti-inflammatory foods include reduce risk of chronic disease, improved gut health, enhanced immune function, and better overall health. Let's go to fruits, organic fruits, berries, and their antioxidants. Berries such as blueberries, strawberries, and blackberries are rich in antioxidants called flavonoids, which combat oxidative stress and inflammation. If you don't get fresh blueberries, you can also use फ्रोजन ब्लूबेरी. अगर आपको आपके लोकल मार्केट में ब्लूबेरी नहीं मिलते
आप फ्रोजन ब्लूबेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हो खांसी। Citrus foods and vitamin C. Citrus foods like oranges, lemons, and grapefruits provide vitamin C. Vitamin C is a very powerful antioxidant that supports the immune system and reduces inflammation. Apples and fiber content. Apples are high in fiber, particularly pectin, which has been shown to lower inflammation and improve gut health. Cherries and anti-inflammatory properties. Cherries, especially dark cherries, contain anthocyanins that have been linked to reduce inflammation and improve recovery post-exercise. वेजिटेबल जरा और भी फ्रूट है, आप और भी फ्रूट के बारे में रिसर्च कर सकते हो। Now let's go to vegetables, organic vegetables. Try to consume as organic as possible. Leafy greens and vitamins. Leafy greens such as spinach, spinach is the palak and kale are packed with vitamins A, C, and K along with antioxidants that help fight inflammation. Cruciferous vegetables and detoxification. Vegetables like broccoli and Brussels sprouts contain sulforaphane, which may help reduce chronic inflammation and support detoxification. इवन हम धनिया जो खाते हैं ना, हम धनिया की चटनी बनाते हैं, तो धनिया बहुत अच्छा है डिटॉक्स हेल्प करने में। Colorful vegetables and phytonutrients. Brightly colored vegetables are rich in phytonutrients, which have anti-inflammatory benefits and contribute to better health. Or alliums and beneficial compounds. Alliums like garlic, onions, and leeks contain sulfur compounds that may help lower inflammation and boost immune function. Whole grains, oats and beta glucans. Oats are a very good source of beta glucans, a type of soluble fiber that helps reduce inflammation and improve cholesterol levels. Quinoa and amino acids. Quinoa is a complete protein containing all 9 essential amino acids, promoting muscle health and reducing inflammation. I just bought quinoa packet. Now I am going to make a food out of quinoa. Brown rice and fiber. Brown rice is a whole grain fine fiber which aids digestion and helps lower inflammation markers in the body. Instead of white rice, you can consume brown rice. अब brown rice का अब ले सकते हो सफेद राइस की बजाय। Barley and antioxidants. Barley contains antioxidants such as phenolic acid, which may contribute to reduce inflammation and improve heart health.
हेल्थी फैट। इस प्रेजेंटेशन में मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, पर आपको देसी गाय का शुद्ध घी इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ हेल्थी फैट। Cow ghee is a good form of healthy fat. You should try to eat as much as possible. That will also help you increase weight and maintain your weight. Omega-3 fatty acids and fish. Fatty fish like salmon and sardines are rich in omega-3 fatty acids, which have been shown to significantly reduce inflammation. Make sure that you eat omega-3, maybe in vegetarian or non-veg form. Nuts and hard nuts like almonds, walnuts, and pistachios are rich in healthy fats, particularly omega-3 and omega-6 fatty acids. These nutrients have lower LDL cholesterol levels and reduce inflammation throughout the body, contributing to better cardiovascular health. आप में से किसी का माइक म्यूट नहीं है? काइंडली प्लीज म्यूट योर माइक। आपका माइक म्यूट कीजिए काइंडली। Contributing to better cardiovascular health. Additionally, nuts contain fiber, antioxidants, and various vitamins and minerals that further promote heart health. Avocado and non-saturated fats. Avocados are an excellent source of monounsaturated fat, which are known to be harder. These fats have been associated with reducing inflammation and are beneficial for lowering cholesterol levels. Avocados also provide a wide array of vitamins, minerals, and fiber, making them a nutrition and anti-inflammatory food choice. एक बार खाली चेक करना हमारे प्रेजेंटेशन बराबर आवाज करनी। That's what double shot. Olive oil and its benefits. Extra virgin olive oil is known for its anti-inflammatory property, largely due to compound called oleocanthal, which has effects similar to non-steroidal anti-inflammatory drugs in monosaturated fats and antioxidants. Olive oil can help protect the heart while reducing inflammation and improving overall health. Next are spices. Wow, turmeric and turmeric. Presentation available. Exit. Thank you. Turmeric, a yellow spice commonly used in Indian cuisine, contains curcumin, a potent anti-inflammatory compound. Curcumin has been shown to inhibit several molecules involved in inflammation and is linked to improved joint health and reduce inflammation related disease. आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, ये जो रिचर्ड बैटलर के अभी तक 60 रिवर्सल हुए, में से 6 रिवर्सल में ज्यादातर कर्कुमिन का बहुत बड़ा हाथ है।
मतलब 10% पीपल आउट ऑफ द 60 उन्होंने कर्क्यूमिन बहुत ज्यादा मात्रा में लिया। हो सके तो आपको मैंने सोच भी बता दिए। हो सके तो आप कर्क्यूमिन खाली पेट लेना। प्लीज ऐड अ पिंच ऑफ black pepper powder, only a pinch of black pepper powder to 1 tablespoon of curcumin and hot water, empty stomach. Ginger and digestive health. Ginger is well known for its digestive benefits and anti-inflammatory properties. It contains bioactive compounds such as gingerol, which can help reduce inflammation associated with digestive disorders and other inflammatory diseases. Cinnamon and blood sugar regulation. Cinnamon is a spice that may help lower blood sugar levels and reduce insulin resistance, making it beneficial for metabolic health. Its anti-inflammatory properties can help reduce chronic inflammation associated. Hey! Its anti-inflammatory properties can help reduce chronic inflammation associated with metabolic symptoms and diabetes. Garlic and immune support. Garlic possesses anti-inflammatory and immune boosting qualities due to its high content of sulfur compounds such as allicin. Regular consumption of garlic may enhance immune function and lower the risk of infection and inflammation. Now let's go to herbs. Basil and antibacterial properties. Basil is not only a flavorable herb used in various cuisines, especially we use it in our Indian cuisine regularly. हम अपने भारतीय खाद्य पदार्थ और जीवन शैली में बेसिल का बहुत ज्यादा उपयोग करता है, but also possesses antibacterial and anti-inflammatory properties. Its essential oils can help combat inflammation and other health issues, contributing to overall well-being. Thyme and respiratory health. Thyme is an herb that may soothe respiratory issues, reduce inflammation within the airways. Its compounds have antimicrobial properties and can assist in alleviating symptoms of respiratory condition. Rosemary and its antioxidant. Rosemary is a fragrant herb rich in antioxidants, which can help combat oxidative stress and inflammation. Its anti-inflammatory effects make it beneficial for enhancing overall health and combating chronic disease. Peppermint and digestive health. Peppermint is known for its calming effect on the digestive system. Can help relieve symptoms of bloating and indigestion, while also possessing anti-inflammatory properties. Promote gut health. Beverage. Green tea and polyphenols. Green tea is rich in polyphenols, especially catechins, which are known for their antioxidant and anti-inflammatory properties.
These compounds are beneficial for heart health and may aid in weight management. Herbal trees and relaxation. Herbal teas such as chamomile and rooibos contain compounds that promote relaxation and may help reduce inflammation. Regular consumption can contribute to overall health. Even beetroot juice and circulation. Beetroot juice is high in nitrates, which can improve circulation and lower blood pressure. It anti-inflammatory properties can benefit cardiovascular health and enhance exercise performance. Bone growth and gut health. Bone growth is packed with collagen and amino acids such as glutamine, support gut health and reduce inflammation. Its nourishing property may also enhance recovery after physical activity. A fermented foods and gut flora. Fermented foods हमारे हमें गट का बहुत ही ध्यान रखना है। फर्मेंटेड फूड हमारे गट में गुड बैक्टीरिया ऐड करते हैं। Fermented foods like yogurt, kimchi, and sauerkraut are rich in probiotics, which promote a healthy gut microbiome. A well-balanced gut flora can help reduce inflammation and support immune health. Dark chocolate and flavonoids. Dark chocolate, particularly varieties with high cocoa content. It should be around 80% plus cocoa. Dark contains flavonoids that possesses antioxidant and anti-inflammatory properties. In moderation, it can contribute positively to heart and legumes and anti-inflammatory fiber. Legumes such as lentils, chickpeas, and beans are high in fiber and protein, which can help reduce inflammation and support heart health. They are rich in antioxidants can contribute to their health benefits. Seeds and nutrient density. Seeds like chia, flax, and pumpkin seeds are nutrient dense, being omega-3 fatty acids, antioxidants, and fiber. So, including these seeds in your diet can help reduce inflammation and improve overall health. Now, the conclusion is incorporating a variety of anti-inflammatory foods and spices in your diet can significantly enhance your health by focusing on fruits, vegetables, whole grains, healthy fats, and specific herbs and spices. You can reduce inflammation and lower the risk of chronic disease.
probiotics forgotten. This presentation will delve into the significance of probiotics in promoting gut. We will explore various types of probiotic foods, the benefits, and share practical recipes to help you incorporate these foods in your daily diet. Probiotics. Probiotics क्या है? Probiotics fermented food होते हैं. Probiotics are live microorganisms referred to as good bacteria that confer health benefits to the host if consumed in adequate amount. They can help to restore the natural balance of gut flora. Gut bacteria may be disrupted by factors such as heart, stress, and antibiotic use. What are the health benefits? Probiotic लेने के क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं. The intake of probiotics is associated with various health benefits, including improved digestion, enhanced immune function, and potentially reduce symptoms of conditions like IBS, irritable bowel syndrome, IBD, inflammatory bowel disease, and allergy. It may also play a role in mental health by influencing gut brain axis. आपको पता होगा gut is called the second brain. में gut का उतना ही ध्यान रखना है जितना हमें ब्रेन का. प्रोबायोटिक क्या क्या प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक. मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ. मैंने संक्षेप में थोड़ा समराइज किया हुआ है. Probiotics are characterized into different strains, each offering the specific benefit. Commonly studied families include Lactobacillus, Bifidobacterium, and Saccharomyces. Each strain can target different health issues, making it important to choose the right type according to individual needs. The role of gut microbiome. अभी कुछ सालों से गट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है. गट माइक्रोबायोम के बारे में. The gut microbiome comprises trillions of microorganisms standing in our intestine. हमारे हाथों में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं. A diverse community aids in digestion, metabolism, and immune response. A balanced microbiome is essential for overall health, while this imbalance can lead to various health problems. Impact on overall health and optimized gut health through probiotics can enhance nutrient absorption, support weight management, and improve mental health. तो मैंने पहले ही बताया the gut is often called the second brain. It provides a significant influence on mood and cognitive connection to disease prevention. Research indicates that maintaining a healthy gut microbiome can potentially reduce the risk of chronic disease, including obesity, diabetes, and cardiovascular disease.
Probiotics can aid in mitigating inflammation, a common factor in many diseases. Probiotic food किस प्रकार के होते हैं? Fermented food are rich in probiotics. Fermented are rich in probiotics and often such as sour, GNV. These foods undergo a natural fermentation process which promotes the growth of beneficial bacteria, making them a vital addition to a gut-friendly diet. Dairy products. Dairy products, particularly homemade yogurt, kefir, and certain cheeses, are well-known sources of probiotics. Look for products that specifically state live and active culture on the labels to ensure contain effective strain. मेरा तो सुझाव ये है हो सके आप प्रोबायोटिक घर पे खुद बना सकते, स्वाद करो, आप घर पे बना के आप खा सकते. For those wanting vegetarian or vegan diet, options like plant-based yogurts, fermented soy products such as tempeh, and beverages like kombucha offer valuable probiotic benefits while supporting dietary preference. Popular probiotic food. Yogurt is one of the most recognizable probiotic food. It comes in various forms, including Greek, ascendant, and non-dairy alternatives. These varieties can each have and probiotic content and nutritional profile, forming one of versatile addition. Kefir and kombucha. Kefir is a fermented milk drink rich in probiotics, often described as a drinkable yogurt. Kombucha fermented tea beverage is also popular for its refreshing taste and potential health benefits. Both can easily be incorporated into a daily routine for enhanced gut health. Sauerkraut and kimchi. Sauerkraut and kimchi are well-known fermented vegetables that not only provide probiotics but also add flavor and nutrition to meals. Sauerkraut made from fermented cabbage, rich in vitamin C and K, and kimchi, a traditional Korean dish made from various vegetables and spices is packed with antioxidant and fiber. Both foods can easily be incorporated to various dishes or enjoyed as a side dish to enhance gut health. Smoothies are an excellent way to incorporate probiotic into your diet. Consider blending yogurt or kefir with fruit, leafy greens, or a nutritional drink for a typical tropical dish.
For a tropical twist, combine banana, spinach, and a coconut yogurt. Alternatively, a berry smoothie with caffeine, blueberries, and flaxseed provides a delicious gut-friendly option. आप यूट्यूब पे और सारे बहुत सारे recipes ढूंढ सकते हो. You can find a lot of smoothie recipes with incorporated with probiotic foods. Fermented salad dressing. Getting salad dressing using probiotic rich ingredients and add boost to your meals. You can even garnish your dressing with extra virgin olive oil, mix yogurt or kefir with olive oil, lemon juice, herbs and spices for a creamy vinegar-based dressing. Using apple cider vinegar can also be enhanced with a touch of fermented mustard for the added flavor and coconut. Homemade yogurt. Making yogurt at home is a straightforward process that allows you to control the ingredients and probiotics. Start with milk, dairy or plant milk, and add a yogurt starter culture. Incubate the mixture at a warm temperature until it's thickened, getting a fresh yogurt ready in beneficial picture. This homemade yogurt can then be enjoyed plain or with fruit and granola. To reap the benefits of probiotic hemp or incorporating a variety of probiotic foods in your daily life. The recommended servings vary by product, but include 1 or 2 servings of yogurt or kefir or other fermented food, which is benefit. Gradually increase your intake to allow your body to adjust. Meal planning them. Integrating probiotic into your meal planning can be for food or fermented food in your lunch and dinner, such as kimchi with rice. The yogurt is a preferred option. Prepare a yogurt perfect with fruits and nuts for easy snacking. You can list of probiotic foods and grocery shopping can ensure regular intake. Snacking on probiotic food. Healthy snacks can also give probiotic in it. These options like yogurt with honey and seed, kefir smoothie, munching on homemade food, fermented pickles on enjoying oat cakes prepared with a layer of probiotic rich hummus and elevate your snacking choice and promoting garden. There may be possible side effects. While probiotics are generally safe for most individuals, it makes mild side effects such as bloating, gas, or digestive upset, especially when you start having these effects are usually temporary, but if they persist, they're advisable to reduce the intake of concerned health performance. Interaction with medication. Probiotic can interact with certain medication, particularly those that affect the immune system. Individuals taking antibiotics should also be cautious.
as antibiotics can diminish probiotic efficacy. Please consult the healthcare provider. There's a lot of research and development going on the research of probiotic and their health effects. I'm particularly taking a probiotic supplement called Eurobiotic, which helped me a lot. Thank you all for your patience. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद for going through the presentation. एक ग्रुप में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। शिवेंद्र जी ने बताया कि क्विनोआ contains all 9 of the essential amino acids. बढ़िया सर, थैंक यू। आज ही क्विनोआ मंगाया, मैं उसका कुछ फूड पदार्थ बनाने वाला। इसलिए आपको बता दूं, सब बीमारियों का जड़ हमारा लाइफस्टाइल है। Our lifestyle is one of the biggest बीमारियों का जड़। All the health problems come out because we are not managing our food or our stress or lifestyle. बिग ग्रुप में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आपको किसी चीज के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हो। में ज्यादातर फूड I've incorporated. Like right now, I can see in that sense it's before me. I can even see Chavanpraj, which I've added in my winter evening schedule. I drink tulsi, ajwain ka pani. Then I also drink chia seed water, chaljeera pani. I also kombucha, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था। मैंने kombucha का ट्रायल भी किए हैं। So, and I've added a lot of probiotic foods in my diet and lifestyle. I would suggest if you want any more information, then message me personally. Anybody has any question, you can type in the chat, or else you can even unmute and ask your question. आप में से किसी को और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, या आप चैट में टाइप कर सकते हो। Sir, how about non? Yes, ma'am. बोलिए शशिकला मैम। How about non-veg and eating eggs? Ma'am, I am not a regular eater of non-veg, but I think Devendra ji can put a light on it. क्या बोले?
नॉनवेज और एग्स के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो नॉनवेज मैं भी नहीं खाता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। अभी एक प्लीज एग्स के बारे में पूछा। एग्स बिल्कुल खा सकते हैं आप। एक हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी थी, एग्स इज सपोज टू बी ए कंप्लीट फूड, सो यू कैन ईट फॉर लेसर कैलोरी, you can boil it. ओके, धन्यवाद सर। और सजिकल मैम, एनी मोर क्वेश्चन? How about milk, paneer? Some neurologists say you should avoid all white things. Okay, ma'am. Ma'am, Just a minute. When if you go to naturopathy doctor, Hmm. he will first say avoid white things, and he first discard salt, sugar, and so on. Maida and milk. No. Maida is good, but most of the people don't eat maida Yeah. because it is very fine, and we don't want fine. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं घर पे बनाया हुआ पनीर रेगुलर खाता हूँ। हमारे Yes, घर yes, पे yes. खुद ही बना। हाँ, अब ऐसा है, डाइटिशियन ने भी बताया था कि यू डोंट टेक मिल्क प्रोडक्ट, पिनाकिन जी। लेकिन हाँ सर, पनीर, इट कंटेन्स प्रोटीन, और you don't eat more. We don't eat regular. We always consume some foods in interval, in some interval. Of you think in Ayurveda it is called, the MND is called Vata Roga. Then if you eat dahi, your Vata will be increased. If you eat curd, your Vata will be increased. So some people says try or go for buttermilk. So do as what you can adjust. Put millets. Eating millets. Millets are very good, excellent. सर मिलेट्स आर वेरी वेरी गुड मैम। मैंने वो मंगाया मिलेट्स। मैं जल्दी उसका रेसिपी बनवा के ग्रुप में शेयर करूंगा। Okay. और आपको एक बात बताऊं देवेंद्र जी, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारे यहाँ दूध है ना, हमारे यहाँ दूध और बहुत ज्यादातर फ्रेश ही होता है। मैंने ऑब्जर्व किया, अफ्रीका में है ना, अमेरिका में 5 लीटर का कैन आता है, उसमें दूध आता है। तो 5 लीटर का कैन में से दूध लेते हैं। अभी आपको पता है नहीं होगा कि वो ज्यादा फ्रेश नहीं होता है, और आपका हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। Right. इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे गाय और भैंस को इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है हम क्या कंज्यूम करते हैं। यू शुड बी माइंडफुल। अरे यू शुड बी माइंडफुल व्हाट यू आर ईटिंग, और आपको आपका बॉडी खुद ही सिग्नल देगा। बराबर ना सर?
पिनाकिनी जी गुड इवनिंग। एक हर्ब Good है evening. अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या रोल है? जैसे अश्वगंधा पाउडर मिलता है, तो उसका क्या रोल है उसमें हमारा एमएनडी में? तो बाकी Well, हर्ब में हम लोग दादा हल्दी। हाँ, अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत जी बड़ा जी। जबरदस्त रोल है। 3-4 जो रिवर्सल है उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में अश्वगंधा भी लिया था। मैंने भी अश्वगंधा ओके 2-3 बार ट्राई किया है। अपने हिसाब से अपना डाइट और न्यूट्रिशन 4 या 6 महीने में चेंज करता रहता हूँ। अश्वगंधा अगर गुड क्वालिटी प्योर अश्वगंधा होता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके ओके। और एक बात सर, अश्वगंधा उसका नाम ही अश्वगंधा है। अश्व मतलब आपको पता होगा हॉर्स। हाँ हाँ, यस, और हाँ, तो सामान्य हर्ब। मतलब अश्वगंधा हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा के आप वो आयुर्वेद के हिसाब से अपने बॉडी में देखो एनर्जी बढ़ाने का भी हेल्प करेगा। लेकिन आप ध्यान में रखना सभी लोग, कोई भी चीज आपको रातों रात ठीक नहीं करेगी। You जी need to जी have a जी। lot of patience। धीरे धीरे धैर्य रख के आपकी बीमारी को दूर करेंगे। आपको है ना गुड हेल्थ, आपको नींद के बारे में सोचना है। शशिकला मैम मुझे रेगुलरली रिमाइंड करती है अब मुझे जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। है ना मैम? तो आप सभी को बता दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट अ गुड हेल्थी डाइट। बाय द वे, वी आल्सो हैव सिडनी ऑन द लाइन। हेलो सिडनी, हाउ आर यू? Did you like the presentation? Kindly put your feedback in the chat, or you can unmute and talk with Cindy. धन्यवाद सुमन जी। ये तो हम आप सबका प्यार है जो मैं मुझे आप सबके करीब लेके आ रहा है। थैंक यू सर। सर कर्क्यूमिन जो लेना है, हेलो हाँ बोलिए। कर्क्यूमिन गर्म पानी के साथ में लेना है। कर्क्यूमिन हल्दी कर्क्यूमिन मैं गर्म पानी में लेता हूँ, उसमें एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर डालता हूँ। सर नमस्कार। सर हाँ ये नमस्कार। डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, जैसे दूध दही वगैरह? आपको बता दूं सर, दूध अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको बलगम बढ़ सकता है। मैं भी बहुत कम मात्रा में दूध लेता रहता हूँ, कभी कभार लेता हूँ, किंतु नहीं, जैसे मलाई हल्दी ये हल्दी सब हाँ, नहीं हल्दी वगैरह डाल के दूध दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, आपका बलगम नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, बलगम नहीं बनना चाहिए बस। बलगम नहीं बनता, मतलब अगर हल्दी वगैरह डाल के देते हैं फिर तो नहीं बनता ऐसे, तो गर्म बट दूध देते हैं। दूध का इफेक्ट आपको 6 घंटे या अगले दिन मालूम पड़ेगा, इसलिए आपको ऑब्जर्व अच्छा करना है। मैं तो ज्यादातर पानी में ही लेता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं Are you बोलिए। और are दही you वगैरह भी नहीं taking ले सकते? दही पनीर सर वगैरह? दही पनीर तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव पनीर खाता हूँ, पनीर का सैलेड खाता हूँ। पनीर का सैलेड हमारे खाते घर हैं, पे अच्छा हमारे घर पे पनीर बनाते हैं और वो अच्छा, घर पे ही पनीर बनाते का हैं। सैलेड खाना।
सैलेड खाते हो, ठीक है। हाँ, सैलेड तो रेगुलर खा हाँ, सकते हैं ना, हर चीज का, जैसे वेजिटेबल सैलेड तो खा सकते हैं ना वो। बहुत अच्छा होता है। आप सैलेड खाइए, पर आपको ध्यान में रखना है आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। वजन कम नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक। ठीक। देखिए जैसे रोटी कम खाते हैं वो, एक रोटी रोज की पूरा दिन में खाते हैं तो वो ठीक है, या ज्यादा बढ़ानी चाहिए। रोटी और के गेहूं के अलावा आटे की, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो मक्की वगैरह की रोटी देते हैं अगर खिलाते हैं तो, मक्की की रोटी तो ठीक है। मैं ज्यादातर ज्वार और बाजरे की रोटी खाता हूँ, कभी कभार गेहूं की रोटी भी खाता हूँ। ओके। हाँ जी। अशोकन सर, वो- अशोकन अच्छा, सर, जवार आपका जवार और सजेशन। बाजरे, अच्छा जवार बाजरे मक्की की What I wanted to ask you was, रोटी, अच्छा are अच्छा you ठीक है having ठीक है। turmeric powder or curcumin powder? I am having the Lakadong turmeric powder with a high content curcumin. But still, to get, like our professor was telling that day, if you have to get 5 grams of curcumin, you will have to have 50 grams of turmeric powder. He said So milligram. basically, He said milligram. So he was सर telling 5 grams, 5,000 milligram of curcumin per day. You can maximum take 12 grams is what the professor was telling. For therapeutic use, take 5 grams. या बट सर मैं आपको बता दूं, जो लाकोडोंग टर्मरिक पाउडर है ना, आप मैक्सिमम 2 बार दिन में टेबल स्पून ले सकते हो। मैंने खुद पे ट्राई किया है, मैं रेगुलर लेता था, भी मैं उसे मॉर्निंग में लेता हूँ, एम्प्टी स्टमक एक ही बार लेता। सर पर इससे वजन नहीं कम होता। पिछले बार मैंने रेगुलर दिया था इनको कर्क्यूमिन का पाउडर मॉर्निंग में, उसमें नींबू और थोड़ा शहद डाल के गर्म पानी में और थोड़ा काली मिर्च डाल के, तो थोड़ा मुझे लगा कि वजन उससे कम हुआ है उनका, काफी फर्क पड़ गया था वजन का। उससे फर्क तो नहीं पड़ता ऐसे कर्क्यूमिन से? आपको बैलेंस करना है सर, के सामने आपको गाय का घी बनाना है। थैंक यू सिडनी फॉर योर चैट, फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच सिडनी। आपको है ना, यू नीड टू ऐड कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, वो वजन मैनेज अच्छा करने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ मैनेज करना है, अब मतलब ऑयली ऑयली आप में है ये ना, चीजें कोकोनट ऑयल वगैरह और ये देना चाहिए। कोल्ड प्रेस नहीं, कोकोनट ऑयल। कौ घी ज्यादा देना दे सकते हैं? हाँ, ठीक। गाय का घी बहुत अच्छा होता है। और कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल मैक्सिमम दिन में 8 चम्मच ले सकता हूँ। पीने मैक्सिमम के 8 चम्मच ले, वो तो हम तो एक या दो चम्मच ही देते हैं, 2 चम्मच देते हैं कोकोनट ऑयल। धीरे 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 जब बॉडी सूटेबल हो जाए, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइए, वो आप, बढ़ाए, ठीक है इट्स ठीक है। कॉल्ड अ गुड फैट। हमारे उसका डॉक्टर उसका बी उसका एम कोई हेगड़े ने, स्टिफनेस भी फर्क पड़ेगा? नहीं सर, स्टिमुलस के बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं है, पर आपको बता दूं कि कोल्ड प्रेस कोकोनट के ऑयल के बारे में डॉक्टर बी एम हेगड़े ने बहुत बढ़िया वीडियो और उनका जवाब दिए। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी गुड फॉर अवर इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ। राइट सर, ठीक है, थैंक यू। Pinnakinji, if you want to take curcumin supplement, can you recommend any good quality curcumin supplement? You any idea on? I will research and let you know by Tuesday, sir. Okay, 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 sir. Because I currently
I was taking supplement. I have stopped taking the supplement. बस अब सप्लीमेंट लेने के बाद मेरे मुंह पे मस्से बढ़ गए थे, बॉल्स बढ़ गए थे. I was Okay. taking the supplement. No, I'm also taking that turmeric powder, lockdown turmeric powder. Anyway, if any good quality supplement is available, then curcumin percentage will be higher. नहीं, ऐसा नहीं होता ऐसा. मैं आपको बताया ना सर, सप्लीमेंट में यू नेवर नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कर्क्यूमिन. ये तो हमने जहाँ से मंगाया उसके बाद रिपोर्ट है 8.5% कर्क्यूमिन उसमें रहता है. हाँ जी, हाँ. By the way, I would like to answer Sydney's question. Who need to gain weight? Sydney, I would suggest to you to add cold pressed coconut oil in your daily routine. To start with 2 teaspoons and go up to 8 tablespoons per day. That will help you manage gain weight. One more thing is you need to add cow ghee. If you are able to get cow ghee, you need to add that in your daily meal and have cow ghee. Cow ghee is a good fat that will help you even gain weight. By the way, आप सभी को बता दूं, I would like to tell everyone that lately in the last 5 to 6 months, I have gained weight, 12 kilos I have gained weight. Right now I am overweight. So I'm also doing intermittent fasting and regular fasting. I can manage my weight. My muscle loss has stopped. My fasciculation and twitching has gone down a lot. मतलब अभी ज्यादा fasciculation और twitching नहीं होता है. इसके अलावा muscle loss भी नहीं हो रहा है. Now my main intention is to start walking and managing my gut health. Once I manage my gut health, and my main intention is to increase my overall immunity. एक बार ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी बढ़ी तो आपकी बॉडी में से बीमारी फुट चक्कर हो जाएगी. ये मेरा मानना है. Again, I am not a medical professional, but I can always tell you what I am doing. You can try all these things what I am doing. सर जी चिया सीड्स बढ़िया है क्या? चिया सीड्स चिया सीड्स अच्छा होता है सर. ये बेनिफिट बहुत सारे. और स्प्राउट Sprout is a very good source of protein. Sydney, I was talking about the cow ghee. Wait, I'll type in the chat. Cow ghee is a very good source of good fat. You can add cow ghee in your daily routine and regime. That will help you maintain and gain weight. Along with cow ghee, you can add cold pressed coconut oil. गऊ घी जो है तो वो जो है गऊ घी तो खाना पड़ता क्या?
हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सावन बोल रहा हूँ। अब बोलिए विजय जी। काऊ घी जो है, काऊ घी तो दाल में खाना पड़ता है कि वैसा खाना? मैं मैं अपना रोटी में गाय का घी लगाते हैं ना, तो रोटी में हाँ जी, हाँ जी। हम लोग रोटी में गाय का घी लगाते हैं। हमें कभी कभार दाल चावल खिचड़ी में घी डालते हैं। All this will very much help you. हाँ जी। ओके, आप सबका और कोई क्वेश्चन है तो एनी मोर क्वेश्चन? Sydney, you can also ping me directly on my WhatsApp number. If you have any more queries, I can even help you. Right? Thank you all. Very soon I will be coming out with essential supplements for neurodegenerative disease. धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you all for joining today Thank and you. enjoying my presentation. Hope you had all the information that I shared. Very soon this will be listed in my YouTube channel. आप सभी से गुजारिश है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू ऑल. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you. Thank you.